So when talking about ions, okay, so now we know what are atoms, what are molecules. Atoms combine to form molecules. How do they form molecules? So one process is there in which atoms get converted to ions. Atoms get converted to ions. How do it gets converted? And what is an ion? Ion होता क्या है? Okay, molecule बनने के लिए ion की जरूरत भी पड़ती है हमें. So let's see what is an ion. Okay, so ion, when you talk about an ion, so ion can be a positive charge or a negatively charged atom. Any atom when it gets positively or negatively charged, कोई भी एटम अपने ऊपर जब पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज अक्वायर कर लेगा तो हम उसको कहेंगे आयन. Okay, so you can see the definition also. An ion is a positively or negatively charged atom or a group of atoms. Okay, it can be group of atoms also. Okay, example देखेंगे हम उसको, पता पड़ जाएगा आपको उसके लिए भी. So an ion is formed, बनता कैसे ion? Whenever an atom loses an electron or gains an electron, या तो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा या इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा. So in either of the case an ion is formed. So here an ion is formed by loss or gain of electrons by an atom. Hence it contains an unequal number of electrons and protons. अभी तक जो स्ट्रक्चर हमने पढ़े थे, जे थॉमसन ने बताया था, what it was given that both has same. Okay, that an atom, number of protons and number of electrons are equal. But when an ion is formed, जब भी कोई एटम आयन में कन्वर्ट होता है तो उसके इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के नंबर इक्वल नहीं होते हैं. ओके, कीप इट इन माइंड. ओके, इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर नॉट इक्वल इन अ आयन. नाउ examples of some ion are given over here, like sodium, you can see some sign over here plus, magnesium ion Mg2 plus, chloride ion Cl minus, oxide ion 2 minus. Okay, why it is 2 minus और 1 minus या 2 plus या 1 plus क्यों होता है उसको भी हम डिस्कस करते हैं अभी. बट दिस इज हाउ वी राइट एन आयन, नेम ऑफ द एलिमेंट और उसके ऊपर हम साइन लगा देते हैं यहाँ पे प्लस या माइनस, जो भी आयन बनाता है वो जिस टाइप का चार्ज वो गेन करेगा. ओके, सो आयंस की बात जब हम करते हैं, इट्स क्लियर नाउ. आयंस व्हेनेवर एन एटम एक्वायर्स चार्ज, ओके, व्हेनेवर एटम एक्वायर्स पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, it is called as an ion. So ions are of two types. Okay, ions are of two types, cations and anions. So let's see a few of cations and anions. Okay, कुछ anions और cations को देखते हैं और उसके बारे में डिस्कस भी करेंगे कि what is an cation and what is an anion. Okay, यहाँ पे हमारे पास कुछ ions के फॉर्मूले हैं. You can see over here like sodium ion, potassium ion, ammonium ion, magnesium ion, calcium ion, copper ion, zinc ion, आयरन आयन, एल्यूमिनियम आयन. यहाँ पे हमारे पास क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड, हाइड्रोक्साइड, नाइट्रेट, ऑक्साइड, सल्फाइड, कार्बोनेट, सल्फेट, फॉस्फेट. अलग अलग आयन है, अलग अलग केमिकल्स हैं. किसी पे प्लस साइन है, किसी पे माइनस साइन है. सम ऑफ देम आर हैविंग पॉजिटिव साइन एंड सम ऑफ देम आर हैविंग नेगेटिव साइन ओवर हियर. ओके, सो ओवरऑल आई कैन से दैट एन एटम कैन गेन पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव चार्ज. ओके, कब पॉजिटिव एक्वायर करेगा, कब नेगेटिव एक्वायर करेगा, इसको हम डिस्कस करते हैं. ओके, क्लियर. सो दिस इज ऑल एन आयंस. अभी हमने यहाँ कटायन एनायन डिफरेंशिएट नहीं किया है, मैंने एक सिंपली वर्ड यूज किया है कॉमन आयंस. इसमें कुछ कटायंस है, कुछ अनायंस भी है इसमें. किसको कटायन कहते हैं, किसको अनायन कहते हैं, लेट्स सी दैट नाउ. टू हैव अ लुक, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट कटायंस. कटायंस हम कब कहते हैं, व्हाट इज अ कटायन? अ पॉजिटिवली चार्ज आयन. किसी भी एलिमेंट पे, किसी भी एटम के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज आ गया, इफ यू आर हैविंग अ पॉजिटिव चार्ज ऑन एन एटम, दैट इज अ कटायन. Okay, so any positively charged ion is known as a cation. बनता कैसे है? How do you get a cation? Any atom when it loses electron, it becomes positively charged. क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है, it is negative. The charge of an electron is negative. So when you are losing some negativity, you become positive. Okay, so same way an atom when it loses electron, it becomes positively charged. Okay, so this is how we get cation. So cation एक एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है, सोडियम एटम है. वी हैव एन सोडियम एटम, इट लूजेस वन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, इट बिकेम Na प्लस. फ्रॉम सिंपल Na इट बिकम्स अ Na प्लस साइन. सो दैट इज एन आयन एंड दिस इज अ एटम, नॉर्मल एटम, एंड दिस इज अ आयन. व्हाट काइंड ऑफ आयन इट इज? cation. ओके, cation बनने के लिए क्या करना पड़ता है? इलेक्ट्रॉन को लूज करना है. सिंपल सा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, cation बनेगा. ओके, सो cation कंटेन्स, जनरली किसी भी एटम में क्या होता है, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव इक्वल होते हैं. सो न्यूट्रल होता है कोई भी एटम.
any atom in the natural state is neutral, but once it becomes a cation, electrons कम हो गए, so it contains less electrons than a normal atom. Due to more number of protons, electrons कम हो गए, protons बढ़ गए, इसके number of protons की quantity ज़्यादा हो गई, it became positive. So it acquires a positive charge. All the metal atoms, generally जितने भी हमारे metals हैं, they all have the tendency to lose an electron and become positively charged cation. तो metals के जो ion बनते हैं वो cation ही होते हैं. Okay, it's clear now. So metals form positively charged ion. Okay, how many electrons do they lose? ये भी हम पढ़ेंगे आगे, अगले चैप्टर में भी इसका डिस्कशन है. How many electrons can an element lose? That's the main question. Some elements can lose 1, some metals can lose 1, some metals can lose 2, some metals can lose 3 electrons also. Okay, you can see over here sodium जो हम देख चुके already. Sodium is losing 1 electron and becomes 1 positive charge. You can see calcium. Now calcium has a tendency to lose 2 electrons. Okay, and acquires 2 positive. Same way aluminium, if you see, aluminium has a tendency to lose 3 electrons, and if it loses 3 electrons it becomes 3 positively charged. Okay, so same way कुछ नाम है हमारे chemistry में. We use some technical terms like mono, di, tri, tetra, penta. Mono for 1, di for 2, tri for 3. So when it loses 1 electron, we call it as a monovalent cation. Monovalent cation means 1 plus charge. If it loses 2 electron, we call it divalent cation. Means its charge is going to be 2 plus. Divalent means 2, cation positive. Aluminium क्या होगा? Trivalent cation. Trivalent cation, that is aluminium. Okay, why? Losing 3 electrons. So this is how. 4 जो चार्ज लूज करे, ओके, प्रॉब्लम है 4 में, 4 लूज नहीं होते हैं. एन एटम और यू कैन से मेटल एटम कैन नॉट लूज 4 इलेक्ट्रॉन्स बिकॉज इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है लूज करने के लिए. So after losing 3 electrons, to lose a 4th electron, a large amount of energy is required, which is not available at that time. So you can see over here, however, usually not possible to remove more than 3 electrons from an atom due to very high energy required for this purpose. Okay. और भी चीजें हैं, आप हायर क्लासेस में और इसमें डिस्कशन होगा. एट प्रेजेंट आपके लिए इतना है कि 4 इलेक्ट्रॉन्स को निकालना मुश्किल है. ओके, इट नीड्स अ लॉट ऑफ एनर्जी. So basically we have only 3, monovalent, divalent and trivalent. 3 तरह के cations हैं हमारे पास, plus, 2 plus and 3 plus. Okay, so that was about cations. कैसे बनते हैं cations? How do we get cations? When an atom loses electron, we get cations. Remember this thing. Okay, it becomes positively charged. जितने electron lose करेगा, उतना ही positive बनेगा. ये ध्यान रखना इसको. So we have a list of cations over here. A list of cations you can see. Hydrogen एक ऐसा non-metal है जो plus चार्ज बनाता है. ओके, रिमेंबर अ नॉन मेटेलिक थिंग विच अक्वायर्स पॉजिटिव. एक और चीज है नॉन मेटेलिक, 2 जगह हमारे पास आएगा नॉन मेटेलिक. वन इज हाइड्रोजन, वन इज योर अमोनियम. Ammonium ion is again non-metal over here. Nitrogen and hydrogen both are non-metals, but this acquires a positive +1. The first column is of monovalent, second column is for divalent, and the third column is for trivalent cations. Okay, so you have hydrogen, potassium, sodium, silver, copper, gold having a positive 1. You can see barium, calcium, magnesium, zinc, cobalt, copper. Copper here also, copper here also. Copper के पास दो tendency है. It can acquire single positive also, it can acquire double positive also. Okay, दो options है इसके पास में. Iron has 2 positive. Iron के पास भी दो options होते हैं. It has 2 plus and you can see here 3 plus also. So iron has 2 tendencies. It can lose 2 electrons also at a time. It can lose 3 electrons also. So it has 2 plus also. It has 3 plus also. डिपेंडिंग कैसा कंडीशन है उस पर, कभी ये 2 लूज करेगा, कभी ये 3 लूज करेगा. सेम वे कॉपर भी कभी ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, कभी ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा. ओके, सो दिस इज द बाइवेलेंट, दिस आर ट्राइवेलेंट cations. So this is the list of cations we are having over here. All are generally metals. Exceptions are there, hydrogen and ammonium. Okay, a non-metallic cation. Exception question I give an example of non-metallic cation. I can give hydrogen or I can give ammonium ion. Okay, so when an atom acquires positive charge, it is a cation. Now let's talk about anion. Anion में क्या होगा? Anion just opposite. उल्टा काम कर लो यहाँ पे. Just opposite. A negatively charged ion is called as a anion.
एनी एटम व्हेन इट एक्वायर्स अ नेगेटिव चार्ज, किसी भी एटम के ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज आएगा तो उसको हम कहेंगे अनायन। क्लियर? नेगेटिव चार्ज आएगा कैसे? इलेक्ट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करने से, टू रिसीव एन इलेक्ट्रॉन। सो व्हेन एन एटम गेन्स एन इलेक्ट्रॉन इट बिकम्स नेगेटिवली चार्ज। क्योंकि नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव है, इट्स टेकिंग एन इलेक्ट्रॉन, अपने अंदर नेगेटिविटी ले रहा है, इट बिकम्स नेगेटिव। सो व्हेनेवर एन एटम gains an electron 1 2 3 it becomes negatively charged. It's clear? You can see here a chlorine atom, it acquires 1 electron, it becomes Cl minus 1, 1 minus है, okay? हमने यहाँ पे सिंपल एक साइन लगाया हुआ है माइनस, मतलब 1 माइनस है उसके पास। So an ion contains, if you talk about, if you compare protons and electrons, तो यहाँ क्या मिलेगा हमको पता पड़ गया अब तो हमको क्या मिलेगा। प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन बराबर मिलेंगे एनायन में? नहीं मिलेंगे। क्या मिलेगा हमको? इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा मिलेंगे। सो एन anion contains more number of electrons as compared to protons, that's why it is negative. Due to more electrons only it is negative. Mostly the non-metals, they are form a anion, okay? They easily absorb an electron. Non-metals, they are always ready to take an electron and they become negatively charged, okay? So non-metals generally form anions and metal forms cations, okay? So now it's clear what is an anion, okay? A negatively charged atom. So it can accept 1 electron, 2 electron और 3. जैसे metals में था हमारे पास, cation में क्या था? It can donate 1, 2 और 3 electron. Here it can accept 1, 2 or 3 electrons. Same thing, if it accepts 1 electron, it is monovalent. If it accepts 2, divalent. Accepts 3, trivalent. You can see over here the monovalent, bivalent and trivalent, okay? So chlorine is accepting 1, oxygen is accepting 2 and nitrogen is accepting 3. Some misprints over here, always होते कभी कभी misprints, okay? So we can see over here, let me correct it a little bit. So over here it is 3 electrons, okay? थोड़ा सा हम, let me make it a little thick so that easily visible. It accepts plus 3 electrons and becomes 3 negative. Clear? So nitrogen is a trivalent anion. It's clear now? Further, so however again जैसे हम 4 इलेक्ट्रॉन निकाल नहीं सकते हैं वैसे 4 इलेक्ट्रॉन किसी एटम को दे भी नहीं सकते हैं, okay? So it requires large amount of energy, so we don't get any anion with having a 4 negative over there. Again, so not possible to add more than 3 electrons to an atom because again it requires great amount of energy. इलेक्ट्रॉन और डालते जाओगे इलेक्ट्रॉन नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करता है, so it starts repelling more. If after 3 electrons if you want to add more, there is a huge amount of repulsion, तो उसके ओवरकम करने के लिए बहुत एनर्जी चाहिए, वो पॉसिबल नहीं होता है. So we have only 3. Clear? And so let me reduce my pen size, okay, and then we will see the next group of, I can say, a list of anions we are having. Again the monovalent, bivalent and trivalent. These are all which are having single negative, double negative, triple negative. Clear? So we have the chemicals over here: chloride ion, bromide ion, iodide, hydroxide, nitrate, nitrite, hydrogen carbonate. Hydrogen carbonate is also called as bicarbonate also, Bi carbonate, bicarbonate भी कहते हैं हम इसको, hydrogen carbonate को. So it is HCO3 having a minus, cyanide ion, the permanganate ion, chlorate ion, all having the negative 1. Here we are having minus 2 and then the minus 3. Okay, so trivalent, monovalent, bivalent and trivalent we are having over here. Some misprints here also I can see, so I can rectify it over here. I can make it clear. So अब सबसे बड़ी बात है कि हमको ये याद रखना होगा, आपको ये इनके चार्जेस जो है +1 या -1 जो भी है ये याद करना पड़ेगा, हमें याद करना है इनको. Okay, you have to remember this because while making a chemical formula we will be needing this charges. Okay, तभी इसका फॉर्मूला बनेगा कौन किससे कितना रिएक्ट करता है. So we have to remember, we have to learn this charges, how much charge does the ion has.
+1 है या -1 है, +2 है या -2 है, +3 है या -3, हमको याद करना है. So try to learn this table. You have your book, you have other sources also, go through it twice or thrice daily and you will get to know. Okay. So moving further, we got the list of cations, we got the list of anions. Okay. There's ions can also, I can classify those ions into simple and compound also. Why simple and compound? Let's go back to the list once. Bromine, chlorine, simple है ये. But if you see over here, there is a combination of atoms HCO. 2, 3. Okay, 2 or 3 different types of atoms make one ion. So that's why we can say ions can be simple or compound. So those ions which are formed from single element, single type of atoms are called as simple ions, like sodium, oxygen, aluminium. You are having magnesium, aluminium. You are having these all. These all ions are simple ions. Why simple ions? Because they are made up of only one atom. But if you talk about compound ions, they are those ions which have more than one type of atoms. Like example, you are having ammonium ion, there is nitrogen and hydrogen over here. Carbonate has carbon and oxygen. Sulfate has sulfur and oxygen. You can see nitrate has nitrogen and oxygen. Hydroxide has oxygen and hydrogen. So you can see over here, whenever an ion is formed with different types of atom, we call it as a compound ions. Okay, it's clear? Or you can also call it as a polyatomic ions, also called as polyatomic ions.